So we were here. Sir, recording. क्या रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई अभी? ऑन तो हो गई. Yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक है. Now you can see here. This is a magnetic circuit with an air gap and two windings. At the last of the previous lecture, I think some part of this has been covered. When we have two windings in a particular core with a uniform magnetic material comprising of one type of material or other type of material such as air gap or other metals. So in that case, total MMF setup by both the windings will be sum of individual windings MMF. So here you can see that primary winding had given its MMF N1 I1, and because if you take the thumb rule by rounding the finger and directing your thumb in the direction, you can see that the flux direction is clockwise as you see here. And also when the secondary winding sets its flux, both are energized coils. These windings are not inducing the voltage in another EMF. मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रांसफार्मर जैसा है कि एक में सप्लाई थी दूसरे में इंड्यूस हो रहा. Here we are giving the supply to both the windings, and in the first winding I1 current enters into the N1 turns and lambda 1 is flux linkage. In secondary winding, another winding 2 current I2 enters the winding, and lambda 2 is the flux linkage. Okay, so total flux setup is in the same direction by both the windings, so it will aid. Now you see that when you calculate the flux is calculated by using the overall reluctance of this path. However, if you have some air gap, some other type of permeability material, so overall reluctance will be affected by all these materials. So the total flux setup by both the coils will be equal to the total MMF divided by total reluctance of this magnetic material. So here you can see that in case there is air gap and AC is the air gap area, and it is assumed that the magnetic material has the permeability infinite. In that case, there will be the reluctance only due to the air gap, and so mu 0 AC G upon mu 0 AC will be the reluctance. So dividing the total MMF by this total reluctance of the air gap will give the flux setup in this core material due to both the windings. Okay, आवाज आ रही रेगुलर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now here you see that the flux linkage lambda 1 is N1 into phi. फ्लक्स लिंकेज क्या होता है? n phi इक्वल टू Li, ऐसा ही होता है ना. तो lambda 1 flux linkage due to the primary flux, that will be equal to N1 into phi. Now you see that phi is the flux in overall core and how it depends. So the reluctance of the path and the total MMF set up by this primary winding. So total MMF set up by the primary winding is, यहाँ पे जो
प्राइमरी फ्लक्स लिंकेज है that is due to its own flux linkage set up by I1 current and also the flux provided by the current I2. ओके, तो यहाँ पे N1 phi I1 and N1 phi I2, मतलब जो फ्लक्स सेटअप हो रहा है प्राइमरी के द्वारा और जो फ्लक्स सेटअप हो रहा है सेकेंडरी करंट द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, N1 phi I1 प्लस N1 phi I2, तो phi I1 कितना हुआ, ये हो जाएगा N1 I1 अपॉन रिलक्टेंस, और phi I2 कितना हो जाएगा, N2 I2 अपॉन रिलक्टेंस। क्लियर, यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. If you don't understand, you can see यहाँ पे आपका लेमडा 1 है, लेमडा 1 इज टोटल number of turns into flux, that is this flux is flux due to primary current I1 plus flux due to I2. Okay, clear? Now you see N1 and flux due to primary will be the primary MMF by circuit reluctance, okay, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से आप इसको क्लोज ब्रैकेट में कर लीजिए, एंड दिस इज सेकेंडरी इज N2 I2 अपॉन रिलक्टेंस। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये N1 स्क्वायर I1 अपॉन रिलक्टेंस प्लस, आप ये देखिए कि आप ये जो R का शेप बनाते हैं, इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल रेजिस्टेंस, मतलब जो R रेजिस्टेंस के लिए हम डिफाइन करते हैं, थोड़ा द शेप ऑफ द R इज समथिंग चेंज। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, N1 N2 I2 अपॉन रिलक्टेंस। यहाँ क्लियर समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द रिलक्टेंस इज सेम इन बोथ द केस, ओके, एंड ओनली द इनफाइनाइट परमेबिलिटी मैग्नेटिक मटेरियल इज assumed. If the reluctance of the magnetic material would have also considered, then here you could have seen mu 0 AC upon G, this term as well as another term which will depend on the mu and the total mean length of the core. Okay, so here you are only considering mu 0, okay, only the air gap. Now you see this is a type of equation which as we know that the flux linkage is also equal to Li. So if we equalize with the L1 I1 plus L12 I2, means the inductance into current, that is the flux linkage in the primary, and inductance, mutual inductance into current of the secondary coil. Okay,
So by equalizing, you see that inductance of primary winding is N1 square mu 0 AC upon G. Okay, and in the same manner, the mutual inductance of winding 1 due to mutual inductance due to the another winding I2 and the current setup I2. Okay, तो यहाँ पे क्या होगा? That will also impact on the total inductance. So L12 equal to N1 I2 N1 N2 mu 0 AC upon G. क्लियर? तो ऐसे ही अगर हम सेकेंडरी के लिए लेते हैं, दीज इक्वेशंस वी ऑल टेक द इक्वेशंस फॉर लेमडा 2. इन दैट केस लेमडा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा 2 इक्वल टू, हियर यू कैन डिटरमाइन अगेन लेमडा 2. लेमडा 2 इक्वल टू N2 फाई. तो ये क्या हो जाएगा? N2 फाई मीन्स N1 phi 1 plus both the fluxes are additive because one sets up the flux in this direction, another sets up the flux in this direction, and this is material is closed loop. ठीक है, तो आप ये देखें दोनों का डायरेक्शन एक ही में है, so they are additive. In that case N1 and phi 1 is this and phi 2 is this. तो अब ये N1 क्या हो जाएगा? ये सॉरी यहाँ पे N2 होगा. तो N2 N1 I1 अपॉन रिलक्टेंस प्लस N2 स्क्वायर I2 upon रिलक्टेंस. क्लियर? ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि N1 N2 I1 और N2 स्क्वायर हो गया यहाँ पे टर्म. जो यहाँ पे N1 था प्राइमरी वाइंडिंग के लिए, यहाँ N2 स्क्वायर हो गया और N1 N2 वाला टर्म रहेगा ही रहेगा. तो लेमडा 1 की कंडीशन में I2 होगा, लेमडा 2 की कंडीशन में I1. मतलब जो म्यूचुअल है वो दूसरी वाइंडिंग से इफेक्टेड होता है. ठीक है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो म्यूचुअली इंड्यूस्ड फ्लक्स लिंकेज. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस रिप्रेजेंट्स द L21 म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड दिस रिप्रेजेंट्स द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग. यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग N1 स्क्वायर म्यू 0 AC अपॉन G. यहाँ पे है म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग इज N2 स्क्वायर म्यू 0 AC upon G. Clear? So here you can see that this is both this L11 and L22 is same except the number of turns are for individual windings N1 square and here N2 square you can see. However, you can see that mutual inductance is same in both the cases. L12 equal to N1 and 2 mu 0 AC upon G, and same you can see that L21 is N1 and 2 mu 0 AC upon G. So this is the case for magnetic circuit, and you can see that induced EMF is a function of flux linkage. So derivative of flux linkage provides the induced EMF. Now by expanding it, you can get the induced EMF in terms of change in current with fixed inductance and change in inductance with fixed current. Two components are there. Suppose we are changing the inductance and we are keeping the current fixed, then also there will be a induced EMF. By changing the inductance, it means you are changing the orientation of the windings related to each other.
ओके, तो जो भी आप ओरिएंटेशन चेंज करोगे, तो सपोज कि एक वाइंडिंग है, दूसरी वाइंडिंग में भी एक्साइटेशन है और आप उसे रोटेट कर रहे हो, फ्लक्स कट हो रहा है, उस कंडीशन में भी क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा. एंड इफ यू चेंज द करंट इन एनी ऑफ द कॉइल, देन देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी वाइंडिंग. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं. एंड द पावर आउटपुट due to this induced EMF is given by I into E, that is I into d lambda. So this will equal to Li di upon dt, and if you integrate, you can get the flux linkage. Here the total magnetic energy stored is the power, and net magnetic energy is stored from T1 to T2. If we are changing the power with time, okay, then in that case the flux linkage is varied from lambda 1 to lambda 2. Okay, suppose we are changing the flux linkage in any winding with current I, then what will be the net magnetic energy stored in the inductor? That will be equal to the integral from lambda 1 to lambda 2 I d lambda. Okay, so change in magnetically stored energy is can be given because we do the same term here. Same terms are required in case of integral, as we are using the d lambda here. So we will replace by term lambda upon L for I, because lambda equal to Li. So here you see 1 upon 2 lambda 1 upon 2L into lambda 2 square minus lambda 1 square will be the magnetic energy stored when we change the flux linkage from lambda 1 to lambda 2. Okay, and the flux linkage, the total magnetic energy stored when we are changing the flux linkage from 0 to lambda. अगर किसी भी वाइंडिंग में हम 0 से lambda फ्लक्स लिंकेज अप्लाई करते हैं, सडनली चेंज, तो उसमें एक मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी. ओके, एंड दैट विल सेट अप द फ्लक्स इन द मैग्नेटिक मटेरियल. सो नेट मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इज 1/2L into lambda square. You can see here that lambda 1 is 0 and lambda 2 equal to lambda. So you get 1/2Li square. This is the total energy stored in the magnetic field. Now we come to the properties of magnetic material. So various magnetic materials are used in motors, transformers, and other magnetic circuits such as relays and other switches. Okay, so our magnetic material depends on what type of application we are doing, such as we want the permanent magnet. So the materials, the properties for permanent materials will be different, and we are selecting the material for the permanent wound coil magnets, and we also want the materials for high frequency application, such as ferrite core we will use, such as inductors used in the electronic circuits such as charger, you can see. So also in AC machines laminations are required because there are eddy currents. So different applications require the different properties of magnetic materials. Clear, students? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So here you can see that the higher flux density is the essential requirement
with lower लेवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मतलब अगर हम करंट कम से कम दे रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी हमें मिले, मींस देयर इज नो एनी लॉस एंड देयर इज नो एनी डिले इन द फ्लक्स सेटअप। ओके, और जो सैचुरेशन होता है, देयर शुड नो एनी saturation in the magnetic material. We are increasing the current, then it will increase the magnetic field intensity, and depending on the magnetic field intensity, the flux will be set up equal to B upon mu. अगर हम H इंक्रीज करते हैं बाई इंक्रीजिंग द करेंट, है ना, क्योंकि करेंट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द करेंट। तो करंट बढ़ाएंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग बी भी बढ़ना चाहिए लीनियरली। बट practical case, all the materials will cease to be linear after certain range. Some will have the higher range for saturation, some will have lower range for saturation. So high magnetic flux density is a primary requirement with lower magnetizing force, and this should have also increased magnetic force and energy density. It should be higher energy density, and the magnetic material should maximize the coupling and reduce the excitation current. ओके, मतलब जो मैग्नेटिक मटेरियल है, that should provide a good coupling. There should no any coupling factor like 0.9, 0.8. There should, we assume that we should have the coupling factor of 1, means all the fluxes will link to the another winding or another magnetic material full, and there will be no loss and delay. Okay, and also depends on the magnetic material properties, also depends on our requirement of torque production and electrical terminal characteristics. हम किस टाइप का टॉर्क प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हमारी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसी है। ओके, so some materials are suppose ferromagnetic materials. These are used for magnetic materials in the motors and transformers. So ferromagnetic materials are that which have the permeability large compared to the permeability of free space. Okay, permeability बहुत ज्यादा होती है, रिलक्टेंस बहुत कम होती है फ्री स्पेस के कंपैरिजन पे। एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि दैट विल हैव सम सैचुरेशन आफ्टर सर्टेन लिमिट ऑफ फ्लक्स magnetic field intensity. Means if you keep increasing the magnetic field intensity, there will be a the flux density will not increase in the due to the coil. Okay, flux density will remain constant. So this is the saturation, and magnetic hysteresis is a important property of magnetic materials, which is already present in some amount in every material. Okay, so for some applications we need the linear magnetic materials, linear and without any hysteresis band, and for some materials we need the hysteresis band. Suppose we have the field magnets, wound field magnets in the DC motor. So what should be the requirement? The flux should remain without means we have not given the excitation, even excitation for some time, the flux should remain there, means that should be the hard magnetic material, and soft magnetic material which just after the de-energization flux will be zero. So in high frequency circuits where high frequency AC or high frequency switch mode DC is used, there should be
very high permeability and the flux will instantly change with the current. Okay, and you can see magnetic hysteresis is the relation between the BH curve, which provides the a representative of magnetic material properties, and also the remnant magnetization is the value when H is 0. Okay, so you can see a DC magnetization curve. What is the DC magnetization curve? This is suppose here we have this is the DC magnetization curve, and this is obtained by pointing plotting the different peak points of the uh, hysteresis curve. So BH here we have the BH loose for M5 grain oriented steel. Here we can see that when we are increasing the magnetic field intensity or current to certain level, it saturates, means its field flux density becomes constant after some value of H. Okay, then we reduce the current or ampere turns, and turns are fixed, so we reduce the ampere. We see that the path does not follow in the same manner as we had increased. The path is somehow different. So here during the reduction of the current, there will be a saturation region and it will start to decrease after suppose at this 20 ampere you had seen that the value of flux was 1.3, but during the reduction of the current after saturation, you see that the flux density was 1.6 and it could not have reduced to 1.3. तो यहाँ पे एक difference रहता है, and it will you can see that after reducing to the current to the -7 एम्पियर टर्न्स जब आप करते हैं तब जाके फ्लक्स डेंसिटी 0 होती है. मीन्स स्टैंडर्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा कि देयर विल बी नो सैचुरेशन, देयर विल बी लीनियर और some slope will be there and it will cross from the 0. Okay, and the same path will be followed for increasing and decreasing current. But here what happens, whenever you increase the current, it's a different path, and during the reduction of the current you have different path. Similarly, you have another graph, you can see that during the increasing of the current it follows the same path, but during now you have start to decrease the ampere current from this point. So then what will happen, the flux density will keep constant for some time. Even during the increasing it has the value of 1.3, but it will reduce to 1.45 approximately only at the same value. Now here you see that it will cross, it will follow this path. Okay, for another range you see that you are increasing the value ampere turns of 7, then you will have the value of 0 flux density. Okay, so in that case you are increasing, first you are increasing here and then you decrease. That case it will follow like this. So this is the only first quadrant part of the hysteresis loop, that is DC part. Okay, so if you apply the peak, you connect all the peak points of these hysteresis curve, like this peak point from where you had written from, suppose you have written from here 100 एम्पियर टर्न्स, यहाँ से आप रिड्यूस कर रहे थे तो आपका पीक पॉइंट ये था जहाँ से आपका ग्राफ रिटर्न होना शुरू होता है.
ऐसे ही एक इसका पीक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, फिर यहाँ पे 0 आता है. If you draw this peak points in a connect each other, you will see that a single valued curve is obtained, and this single valued curve is called the magnetization curve. Okay, clear? Any confusion? आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग ऐसे नहीं बोलते हो तो हमें ये लगता है पूरा मैंने तो पढ़ा दिया और आवाज ही नहीं गई. ठीक है, क्योंकि ये यहाँ दिखता नहीं है ना, कुछ पता नहीं चलता ना सामने बैठे हो कि नहीं है. तो यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. सर डीसी मैग्नेटाइजिंग कर्व थोड़ा सा एक बार और बता सकते हैं क्या? कौन सा? डीसी मैग्नेटाइजिंग कर्व. ओके, डीसी मैग्नेटाइजेशन कर्व इज द प्लॉट ऑफ द पीक पॉइंट कनेक्टेड टुगेदर. सपोज इसका पीक पॉइंट यहाँ पे है, मतलब ऐसे हम डिफरेंट वैल्यू आप मतलब कितने हायर वैल्यू पे से हम रिटर्न होना शुरू होते हैं. हम यहाँ से भी रिटर्न होना शुरू हो सकते हैं, करंट को रिड्यूस करना शुरू कर सकते हैं. हम यहाँ से भी करंट को रिड्यूस करना शुरू कर सकते हैं. जाते टाइम तो इसको फॉलो करेगा और आते टाइम इसको फॉलो करेगा. ऐसे ही जब हम यहाँ पे रिड्यूस करते हैं शुरू, तो जाते टाइम यहाँ फॉलो होगा, फिर ये रिड्यूस होगा. तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होगा कि ये डिफरेंट पीक पॉइंट्स अवेलेबल होंगे. अगर हम इन्हीं पीक पॉइंट्स को अगर हम वो करना शुरू करें, प्लॉट करना शुरू करें, तो ये एवरेज पॉइंट यहाँ पे आएगा. अगर हम बहुत कम वैल्यू लेते हैं तो हमारा एक ऐसे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, फिर और बहुत कम वैल्यू के लिए यहाँ ऐसे जाएगा. तो हम यहाँ पे ले लेते हैं. मे बी सम सम डिले में भी देयर. तो यहाँ पे आपका जो एक इसमें दिखाया है लॉगरिथमिक स्केल में दिखाया है. तो लॉगरिथमिक स्केल मतलब कि जिससे कि यहाँ पे से ये बढ़ रहा है, इसका मतलब कि लॉगरिथमिक स्केल में बढ़ने का मतलब है कि लीनियर स्केल में बहुत दूर में ऐसे स्लोप आएगा, ऐसे जाएगा. उसके बाद यहाँ पे ये सैचुरेट होगा. ठीक है, तो लीनियर स्केल में ये ऐसा सैचुरेट होगा. तो ये बहुत लंबा स्केल जाएगा लीनियर की बात अगर हम करें तो, इसलिए लॉगरिथमिक में दिखाया है. नाउ यू कम टू द AC excitation. Just we were talking about the DC excitation and only first quadrant of the hysteresis loop was being covered. Okay. Now what happens when you use the AC excitation? During the AC excitation, we have set up the flux high max sin omega t in a primary one of the winding, and it has the area AC and B max set up by this flux. So B max sin omega t, induced EMF E max cos omega t. ओके, एक इंड्यूस्ड EMF सेल्फ वाइंडिंग में भी होता है, खुद ही वाइंडिंग में इंड्यूस्ड EMF हो जाता है ड्यू टू द लिंकेज ऑफ द सेम फ्लक्स. बिकॉज एवरी flux set up by any coil will link with its own, and for opposing that flux the winding will induce a EMF. This winding will try to set up a current such that it will oppose the setup flux setup in the coil. तो एक लेंज का नियम लगता है. तो यहाँ पे सेल्फ यहीं पे जो वाइंडिंग है उसी में ही एक इंड्यूस्ड EMF भी होगा, एंड दैट विल बी E max cos omega t, and 4.44 FM फाई को रिप्लेस करेंगे ACB max. तो दैट इज द simple equation, and here you see that now the total length and flux field intensity at C, and total length is LC.
So depending on that, the RMS current can be given by this magnetic field intensity set up in this magnetic material and the mean length of the magnetic material. So the power is given by this equation. So the power per unit mass, okay, the RMS power per unit mass is given by Bmax H RMS root 2 pi F upon rho C. This is the volume density. Okay. So वॉल्यूम डेंसिटी मतलब कितने वॉल्यूम में कितना मास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट when you are increasing the flux, then you see that you are in this path. When you are increasing the flux, you are in this path. So this path is considered a current I dash will be taken at this value, okay, or I double dash will be taken at this in case of zero flux. Zero flux condition में you can see in case of zero flux you have I dash, and in case of this phi dash you have the I dash phi. Okay, now you are increasing and up to peak value here phi, you have come to this point. Now you are decreasing again the current. Now when you decrease the current again, okay, and you decrease, then after some times, suppose this is the value of the flux during the decreasing, so this point in the hysteresis loop can be given by this. Okay, तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स विथ करंट ये ड्रा की जा रही है, so this is related to whole of this excitation. Okay, just a minute. So excitation is associated with the energy in magnetic field in the core, and part of energy is dissipated as loss and results in heating in core. Rest appears, अगर हम कोई एक्साइटेशन करंट देते हैं तो कुछ तो एनर्जी कोर लॉस में चली जाएगी, कुछ रिएक्टिव पावर में जाएगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो जाएगी रिएक्टिव पावर. ओके, एंड रिएक्टिव पावर इज नॉट डिसिपेटेड इन द कोर, ये साइक्लिकली सप्लाइड होती है, ठीक है, एक बार पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी, अभी जाएगी लोड की तरफ, और फिर रिएक्टिव पावर वही दूसरे टाइम पे रिटर्न होगी, तो एक साइक्लिक है. एंड I square R heating ohmic heating will be there associated with the induced current in the core, and there will be eddy current because due to this current, according to the Faraday's law, there will be time varying magnetic field which gives rise to the electric field in the परपेंडिकुलर प्लेन. अगर फ्लक्स हम सेटअप करते हैं तो परपेंडिकुलर फील्ड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, एंड दिस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोवाइड द एडी करेंट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इन द कोर मटेरियल, ठीक है. एंड दिस एडी करंट
opposes the flux density in the material. Okay, तो ये eddy current should be avoided. Okay, and it will also turn into a eddy current will also turn into a loss. Okay, now you can see here that the suppose RMS power dissipated in the core material and the flux density. So suppose that with the increasing power, the flux density is constant. Okay, power, though the power RMS power applied to the winding is increasing, but the flux density is constant. So we have no any benefit after certain range. You can see here the hysteresis loop proportional and the hysteresis loss is proportional to the area. ठीक है, ये कितना एरिया है उस पर डिपेंड करेगा hysteresis loss. Okay, so the energy input to the magnetic core is given by this equation. Now some of the examples are there. Grain oriented material has the higher favorable direction of magnetization and core loss is low and permeability is very high. You can see that core loss is also related to the magnetic flux density. For M5 grain oriented materials, grain oriented materials have lower loss in the direction of the magnet rolling. ग्रेन ओरिएंटेड मींस रोलिंग डायरेक्शन पे ग्रेन्स ज्यादा फास्टली ओरिएंट होते हैं. ठीक है, and less magnetizing force is required for establishing the same magnetic flux density. Here you have a problem. You can try to solve it after the at the end. And here you can see that the hysteresis loop for first second quadrant of this hysteresis loop is shown for different materials, and there is a coercivity and remnant flux density. Okay, BR. So here you see remnant magnetization BR corresponds to the flux density which would remain in closed magnetic structure even if the magnetic field intensity zero. जीरो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द permanent magnetic material properties. Okay, M5 steel, Alnico, these are some permanent magnetic materials. Neodymium, you have seen often in YouTube videos, some neodymium magnets, the people are doing some small projects. So these have certain properties, and hysteresis loop for Alnico is given here. You can see it is very wide. Okay, and for some different material M5, Alnico 5, here you see that remnant magnetization should be higher for the magnetic material, magnets, permanent magnets. मतलब कि अगर हम उसमें कोई करंट नहीं भी देते हैं तो उसमें फ्लक्स रहा आता है, मींस फ्लक्स इज फॉर लॉन्ग टाइम, इट हैज ओन इट्स ओन फ्लक्स सेट अप वंस एनी टाइम, इट विल कीप द फ्लक्स कांस्टेंट. तो ये रिमनेंट मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होना चाहिए. एंड कोर्सिविटी, दिस इज द
value of magnetic field intensity required to reduce the material flux density to zero. अगर सोचे हम कि इसका फ्लक्स डेंसिटी घटाना है, मतलब फ्लक्स इसका मैग्नेटाइजेशन हमको जीरो करना है, इसका फ्लक्स डेंसिटी जो फ्लक्स मिल रहा है हमें उसको जीरो करना है. सो वी नीड फॉर ए गुड मटेरियल वी विल नीड वेरी हाई negative current, negative flux. Okay, just me try. तो in case of magnetic materials, the coercivity should be very high. Okay, so here hysteresis loop is shown, and second coordinate we can see that the residual flux density or imminent magnetization VR is approximately 1.22 Tesla, where the S is zero. Okay, in case of this magnetization should be very high, and large value of coercivity means when we want to reduce the flux density, we need very high value of negative, very high negative value of current. मतलब जितना फ्लक्स आ रहा है उसके अपोजिट में हमें इतना ज्यादा फ्लक्स देना पड़ेगा, इतनी ज्यादा करंट रखनी पड़ेगी, तब वो डिमैग्नेटाइज होगा. तो दिस शुड आल्सो बी वेरी हाई. हियर इन केस ऑफ एलनिको 5 you have -49 kilo ampere per meter. Okay, and the ampere per meter जो है this is the unit for the H, and here magnetic field intensity. Okay, एम्पियर टर्न्स एमएमएफ अलग एम्पियर टर्न्स होता है, और यहाँ पर एच जो है एम्पियर पर मीटर. यहाँ पे -49 किलो एम्पियर पर मीटर है. इलेक्ट्रिकल स्टील हैज आल्सो लार्ज मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज 2.4 टेस्ला, एंड कोर्सिविटी इसमें बहुत कम होती है. मींस इफ यू अप्लाई सम नेगेटिव वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी -6 सपोज, तो उसी में ये जो है डिमैग्नेटाइज हो जाएगा. तो मतलब ये कमजोर मैग्नेट है. एलनिको 5 इज अ गुड मैग्नेट. तो ऐसे ही है. नाउ यू हैव द प्रॉब्लम यू सॉल्व हियर. ओके, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. आवाज नहीं आ रही है. I keep this problem for the next time. Okay, कितनी देर से नहीं आ रही है? सर अभी से नहीं आ रही. हेलो सर अभी कितने मिनट हुए लगभग? अच्छा, मतलब जो पूरा हमने डिस्कस किया हो तो सुनाई दे रहा था ना? ये सर वो हाँ, दे रहा था सर. एलनिको 5 मैग्नेट तक आप बता रहे थे. ठीक है, ठीक है. मतलब ये जो I was at the end of the last slide that has been discussed properly ना? यस ये सर. सर अभी भी थोड़ी कट कट के आ रही है सर आवाज. अभी नेटवर्क का इशू है, अभी इसमें क्या कर सकते हैं. तो ठीक है, जस्ट आई चेक ऑल द स्टूडेंट्स आर देयर. अभिजीत, Yes, sir. अजय शुक्ला, Yes, sir. Present. अलका यादव, Yes, sir. अमृतांशु मिश्र. प्रेजेंट सर. ठीक है, अमृतांशु मिश्रा प्रेजेंट. गौतम Present, कुमार, ऋषिराज sir. जायसवाल प्रेजेंट सर. यस. शिवा बिंद,
Present, sir. शिवांग सिंह, Yes, sir. सुरुचि जैन, सुचिता जैन, Present, sir. सौम्य Yes, sir. रंजन कुंडू, Yes, sir. सौम्य रंजन कुंडू, ओके। विजय कुमार, Yes, sir. विजय कुमार, Yes, विजय sir. राजोतिया, प्रेजेंट सर, विजय राजोतिया प्रेजेंट। ओके। प्रतीक, Yes, sir. Present, sir. अविनीत खरे, Present, sir. गरिमा शर्मा, Yes, sir. निखिल प्रभात, Yes, sir. ओके। ऑल ऑफ यू कैन लीव। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. ठीक है।